three parts, and Vaibhav and Karthik will also be speaking about some of the full stack features which we'll be studying today. So this session is more conceptual rather than very deep dive into some full stack technology. Mm, okay. So am I audible, right? I'm audible. Yes. ठीक है. Mm, okay. So I'll be explaining. I'll start with three-tier architecture. Before that, the three-tier architecture, maybe in simple language, we can say three levels of a project or an application which you'll be making in a full stack. Most of your future projects will probably be a three-tier architecture. It's mainly client and client level, a logical level, and a data level. Mm, data. In simpler terms, we can also call them front end, back end, and database, which you already know most of the time. Ki front end सीखना है, back end सीखना है and all. And mm, database, back end. Hmm. You all must have heard about the popular stacks which your colleagues might be learning: Mern stack, Mean stack, Java stack, or some mobile language, mm, Flutter, Dart, mm, Flutter and Dart, and each etc. So basically, these are very beginner-friendly stacks based on this three-tier architecture. Uh, Three-tier architecture is widely used because it's really easy to build and deploy, and most of the startups you will be knowing are also a three-tier architecture. Hmm. In last class, we learned about React, a front-end library of JavaScript. So basically, in front-end, normally in front-end technology, we'll use React, Vue.js for websites, Vue.js, and maybe Angular, uh, some other a mobile technology, maybe Flutter, etc. And for backend, I'm just giving you a overview about technology used in each levels. I'll be explaining more about each level soon. You can just read about Express, Django, uh, Hono. You all must have heard about Express and Django. Django is on Python, your first sim language. Express is on JavaScript. Database are mainly are we generally use SQL and NoSQL database. You must have heard about MySQL, MongoDB, DB, Postgres, etc. So in front end, like the site I'm using Excalibur, I'm interacting with this site right now. Like I'm drawing these circles and everything. So a user, which a client interacts with a client layer that is front end.
So whatever you see in a site or a working application, and you interact with it, like signing up, signing out, drawing, or clicking any button here and there, share library. It's all come under front end, and any processes, any logical thinking, like someone saying interaction, and any logical processes like checking the authentication of a sign up and sign in, if you are already signed in or not, if you want to share this file, like this option, share, save, open, these are all the processes which require some logic comes into backend. Mm, logical layer or processes, and routing all as well. Routing, you'll get to know more about it when you start learning what actually backend is, and how every other stuff is done there. And in database is basically all the data which your site holds, the storages, and how you work upon it. Like, you have to search each and every data through the whole database. You need to if you are working in a credit card application, you need to perform some transactions. So search, transactions, transactions, etc., all comes under database. This is a basic overview of a three-tier architecture system. A front end can communicate with a backend, like for example, any site, which includes a user sign up and sign out. Uh, like, we are signing in a site, username and password, username, password. Just for a better understanding, whatever you type inside these boxes and interact with this site, it all comes under a client layer, front end. And in logical, after entering username and password, the backend searches for the exact username and password to exist inside database. It authorizes it. If the username and password is correct and it is authorized, then we can access more about that site. So a front end communicates with a backend communicates with a database to see if the actual information actually exists or not. Database returns back after searching through all its data that yes, it exists, or it doesn't exist. Backend processes that. It also checks the authentication, cage, cookies. You must have heard about cookies and JSON web tokens. Well, it's fine if you haven't heard about that as well. Cookies, JSON. They are just authentication methods. JWT. They are just authentication methods. For example, like this site, I'm already signed in right now. But if I change any, like I have to reload, then I'll be signed in as well. So backend takes everything into the consideration that you don't have to sign in each and every time after changing a page. That also comes into backend, and all the processes which is handled by the logical layer. And this then returns back to front end that yes, the user is legit and he can access your site anytime. So basic example of a three-tier architecture. Mm. Mm. So a popular diagram of this system design would be a client layer, logical and data tier. All the web framework, system workflow, processes, management comes under the second layer, and all the interaction comes under the first layer of client tier. And data is about all the storage and the working, like search engine, transaction, etc.
And it's really very easy to get started with this whole three-tier architecture. You don't have to much think about it. Like there are many more system complex system designs like two-tier architecture, six-tier architecture, which comes with more and more complex databases and projects. For example, this doc is shareable. Like two or three people can work on the same document at the same time. There, here, this is not a three-tier architecture. It's something more complex. We have to use web sockets and all. But as normal working application, which you'll generally make in your personal projects, this is what it will look like generally. Mm. And it's really very easy to get started at it. So for a beginner, you should know about this. That is TPI. Okay, before that, uh, I'll say that front end can't directly talk to the back end generally. And why is that? Because of security measures. If a front end directly talk to the database without any logical intervention, we'll get many errors. For example, username you just send a username, search to the database without any authentication of cookies and JWT. Like for example, you have to, after reloading, if I have to sign up again, that will be a problem. And second problem is security breaches. Mm, inspect and all these security, you can directly access the database through these. So that's a problem. So we don't generally communicate front end with databases. There are different ways we communicate front end and database, but before that, are there any confusion and questions before I start with more? Okay, I'll just continue. लाइक कोई कंफ्यूजन आए तो प्लीज मेंशन कर देना. Okay, so REST API. Generally, uh, all the data transfer between database, backend, and front end is done through APIs. What are APIs? APIs are application programming interface. Mm, fuck. APIs are application programming interface, and you will generally deal with REST APIs. REST API, for example, any site, Google Meet or maybe Excalibur. Whenever you share these sites, you must have seen this HTTPS. This is a safety protocol which we use generally in webs, and we'll not much deep dive into it because that's a topic for system design and networking. So what this HTTPS does is make your all that internet access a safe journey. So REST API follows HTTP protocol, which is get post put and delete. Mm, Once again, sorry, call आ गया. Yeah. Get, get post and put delete is what HTTP protocol follows, and REST API has to follow it. And REST full form is representational state transfer state transfer. My bad. You don't have to learn it. Basically, it's an architectural style which we use to communicate between these layers: front end, back end, and database. An example would be HTTPS. Example, you are hitting this URL type link, and all the user which have been which are in the database.
are returned to you. So backend hits this hmm, backend hits database with this URL, and all the users in the database is returned to you in either backend and frontend, what wherever we need this. So that's a simple example of a REST API. And after building all these platforms, mm, we need to deploy it as well. Mm, Once again, deploy for first of all, you'll be making the whole application your local machine. Like in last class, we made a React application, all pre-made React application through Read. You need to deploy it so the other users can also use it. We generally deploy it through cloud, uh, la- um, cloud platforms like AWS, GCCP, Microsoft Azure. So only front end, back end, and database, as well as deployment. This everything all together comes into full stack. So to be a full stack engineer, you need to at least know about what is deployment and how cloud works and all. I can show you. No, I can't show you right now. Yeah, you will be learning about deployment, cloud basics, and all the processes in next 2 or 3 days when there'll be a cloud session. And also, we need to scale backend database and front end accordingly. For example, this Excalibur site, this doc site, are used by many thousand or million people right now. So the backend has so much load that it needs to be scalable according to the number of user it hits. For example, there are only 1,000 people hitting in the morning, or in the evening there is more than a lakh people hitting the same backend and database. So your deployment should be in a way that backend and database are scalable according to the number of users they hit. So you need to also take care of that during your deployment state in cloud. So that's a completely different field: front end, back end, database, your development here, and your deployment in cloud. So this all comes under full stack, by the way. Short polling and long polling. We are 15 minutes in. There are short polling, short polling. As I mentioned, we communicate through all these layers through APIs, but there are some communication protocols and rules generally we use while communicating through all these layers. Mm, For example, hmm, hmm, this is your client side made on JS, React, or anything. Maybe you can call it a front end, JS. And this is your process side, which is made on Node.js. I clicked to front end. This is your processing side, which checks your request, whatever the front end gives, and delivers accordingly. You establish the connection between a front end and a process management process. Like you establish a connection between a front end and a process, then the process has to check if there is actually a return statement for this request or not. If, for example, the request we just sent has no response, the database hasn't changed, and we have nothing to reply back, so it will just give an empty object back to the front end without any reply.
and the front end has to mm, and the front end has to send a request back again after some like 3 seconds. 3 seconds. The front end has to send a request back to the process manager after the 3 seconds to check if the reply of that request has come back or not. And then and your process replies back again with nothing. For example, we are taking a scenario where there is no reply from the backend. So this process continues till there is a actual object which the process returns back to you, which has a specific output, and then this communication ends. So this is not a correct way to design some protocols or communication between all these layers. We generally don't use this short polling, but for a prototype based application or a new application which is not a perfect state right now, we'll be using short polling as a beginner. Normally in React we use short polling, by the way. You have to change many stuffs to change it to a long polling or a WebSocket. In long polling, mm, in long polling, a connection is established between front end and a node, front end and process, and process has two options: whether to reply it back that there is no return object from the database, or there is a object return object from a database. So the connection is established between front end and the process till we have a return object. As soon as there is a return object, maybe after 5 minutes or 12 minutes, mm, the process sends back back the response. uh, Whenever we get the response object from the database. In that way, front end doesn't have to repeatedly send a request back to the processes after 3 seconds or whatever timer we'll set in the application. Mm. This is long polling. This is a better way of communication between all the architecture, and this is we generally use in big applications. And there are more communication ways like WebSockets, HTTP, etc. But that's something which we have to deep dive in. So I'll not be explaining much about all those communication. This is just a general overview how we communicate through all these levels of this three-tier architecture. Now, uh, that's it with three-tier architecture. Is there any questions regarding this? Regarding these, sorry. If there aren't, Weber will continue with uh, some backend topics. Weber, Hello, introduction. hello everyone. I'm Rabha. I'm the technical co-head of the Full Stack Club, and today I'll be telling you a short brief about what is backend as a services. So, have you ever heard of Firebase or AppRite? Mhm. Okay, so Firebase provides us generally a lot of tools like authentications or like manage real-time databases. So, I'm going to show you a short demo on how you can implement a login with Google on your website. Is my screen visible? Hello. Okay, I guess it is. So just go to the Firebase console and you need to set up a new project. So like, give it a general name, login demo. Continue with that. Select an account, default account. You might have seen options like how like directly login with Google
like two-step verifications, and how to do that through Firebase. It's very easy. There's only one step that you can use whenever you want to connect Firebase with your authentication services. Okay, like I am creating, what I want is authentication, and what all get started. If you don't know how to do backend and if your front end is ready, you can use Firebase. Like I want a login with Google option, that's why I'm using Google. Enable it first. email ID प्रोवाइड करो. I guess सेव कर दो. यस, एक बार इसकी सेटिंग में आके यू हैव टू चेक कि कहाँ पे ये रन होगा. लाइक ऑथराइज डोमेन में यू हैव टू ऐड द डोमेन ऑफ योर लोकल होस्ट. Like if I am running on HTML, let's say, I have to add the local host that is 127.0.0.1. And once you deploy your app, you have to send the domain and the add domain options so that you can use your login with Google when you deploy your application. Now, how do I get an overview? Yes, build authentications, template. Here are the API keys. Uh, just a second, guys. Oh yeah, I have to name it here. Login, register my app. Okay, now I get my API keys or domain. All of this is required to run your application. I copy it and come in my code. Okay, this is the basic structure that you want to make a user register through login with Google and display its user photo, name, and email ID. Now, how do you do it is go to your create an index.html, basic structure, login, एक बटन बना लो, इसकी आईडी प्रोवाइड कर दो कुछ ताकि हम उसको जावास्क्रिप्ट में यूज़ कर सके. गूगल साइन, यहाँ पे लिख दो लॉगिन विद गूगल. इसको रन करते हैं. एक नॉर्मल वेब पेज खुल गया, इसमें एक बटन आ रहा है लॉगिन विद गूगल और इससे कुछ और एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा. राइट नाउ हाउ डू यू डू इट इज पहले तो इसमें अपनी जावास्क्रिप्ट इंपोर्ट कर दो. स्क्रिप्ट एक मॉड्यूल है, क्या है script.js. अब इसमें क्या हुआ है, व्हाट आई हैव डन, मेरी सारी फायरबेस की कीज आ गई एंड एक ऐप बनाया है जो कि इनिशियलाइज कर रहा है फायरबेस को. फिर उसमें ऑथेंटिकेशन यूज़ करना है, इसलिए मैं ऑथ यूज़ करूँगा गेट ऑथ से. ये सब मुझे फायरबेस से मिला है. नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज मेक अ प्रोवाइडर जिसमें गूगल ऑथ प्रोवाइडर आएगा एंड आई वांट टू डू साइन इन विद पॉपअप. अब साइन विद पॉपअप में एक्चुअली होता क्या है मुझे पता नहीं है, तो आई जस्ट कॉपी इट आउट, पेस्ट करूँगा. इसका डॉक्स चाहिए मुझे, तो यस ये रहा कि अगर मुझे कभी साइन इन विद पॉपअप यूज़ करना है उसके अंदर मुझे दो चीज़ें पास करनी पड़ेगी, दैट इज ऑथ एंड प्रोवाइडर. देन जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वहाँ से एक यूज़र बनेगा. तो मैंने इसमें यही किया है. मेरा जो बटन है उसका मैंने गूगल साइन इन लगाया. एक इवेंट लिस्टनर कि जब भी क्लिक हो मेरा साइन विद पॉपअप कॉल होएगा. उसके अंदर मैंने दो अपने ऑटो प्रोवाइडर डाला है एंड मेरे को यूज़र मिल गया. तो दिस इज हाउ यू बेसिकली डू लॉग इन. अगर मैं इसको चेक करूँ, एक कंसोल ओपन हो रहा है. राइट यहाँ पे पास ऑप्शन आ गया गूगल आई सेलेक्ट करके आई कैन नेविगेट टू नेक्स्ट पेज और इफ यू वांट दिस पेज ओनली.
बट नाउ हाउ डू आई नो कि यूजर लॉग इन हो गया है, और अगर लॉग इन हो गया है तो कैन आई यूज एनी ऑफ द इन्फॉर्मेशन? तो मेरे पास उसका फोटो है, ईमेल एंड नेम है। तो हाउ लाइक कम आउट, एक नॉर्मल डिव बना लो, उसके अंदर पास व्हाट यू वांट टू यूज, लाइक एक डिव आएगा, एक इमेज आएगी, इमेज, उसका तुम आईडी दे दो जो तुमने यहाँ दे रखा है, आईडी दैट इज यूजर फोटो, यूजर फोटो। एक और एक H2 ले लो, उसकी आईडी क्या आ जाएगा, यूजर डॉट नेम, ठीक है, इस यूजर नेम, और एक और है दैट इज यूजर ईमेल। Yes, now when I log in, I should get my image, name, and my email ID, right? Hot reload it. Login. ID है यूजर फोटो, ID है यूजर नेम, पैराग्राफ टैग है, ठीक है। अगर कोई मेरे साथ कर रहा है तो उसको बता देना, आई शेयर द स्क्रिप्ट, अगर उसको चाहिए हो तो हर बार ये सेम स्क्रिप्ट यूज़ करके तुम अपना लॉगिन करा सकते हो इजीली। Step I have to pass an ID, user info, yes, yes, तो मेरे को अपनी प्रोफाइल फोटो मिल गई, नेम मिल गया, और मेरे को ईमेल आईडी मिल गई। अगर तुम चाहो तो इसको अपनी वेबसाइट में नाम में यूज़ कर सकते हो, दैट यू हैव लॉग इन हेलो वैभव, तुम ऐसे यूज़ कर सकते हो। और एक फायर बेस का हर बार का ये सेम स्क्रिप्ट रन होगा, इसमें तुम्हें बस अपनी एपीआई की पास करनी होगी। तो रिएक्ट में करो तुम्हें इसको हाइड करना होगा थ्रू .env फाइल, अदरवाइज डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। बाकी यहाँ पे बेसिक जावास्क्रिप्ट है कि मैं एक बटन कॉल किया है, उसकी आईडी से उस पर एक इवेंट लिस्टनर लगाया है कि जब भी मैं बटन पर क्लिक करूँ, आई हैव अ फंक्शन टू डू दैट इज साइन विद पॉप। उसके अंदर दो चीज़ आएगी, ऑथ एंड प्रोवाइडर, जो कि एक रिजल्ट देगा, एक यूज़र बनाएगा। नाउ व्हेन आई हैव दैट यूज़र, अब मैं उस यूज़र का फोटो, नेम एंड ईमेल यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं उसको यहाँ डिस्प्ले करा सकूँ। तो क्या किसी को इतने में कुछ डाउट है? ओके, वैभव, वो स्क्रिप्ट का कोड कमेंट्स में शेयर कर देना इसके। ओके। ये स्क्रिप्ट तुम हर बार यूज़ कर सकते हो व्हेन यू वांट टू डू लॉगिन विद फायरबेस। बस अपने एपीआई कीज डालो और यहाँ पे अपना बटन का तो तुम्हारा आईडी हो वो डाल देना। बट फायरबेस क्या करता है, थोड़ी कंस्टेंट्स डालता है इफ़ यू वांट टू स्केल योर एप्लीकेशन। तो उसकी जगह फाइव तुम सुपर बेस यूज़ कर सकते हो, जो कि एक ओपन सोर्स ऑल्टरनेटिव है टू फायरबेस। इसमें तुम आराम से स्केल कर सकते हो तुम्हारा एप्लीकेशन। इट प्रोवाइड्स 70,000 एक्टिव यूजर्स, तो काफ़ी अच्छा नंबर है। इसमें तुम्हें वेक्टर डेटाबेस का सपोर्ट मिल जाता है, और बाकी सेम फीचर्स लाइक ऑथराइजेशंस या तुम्हें रियल टाइम डेटा मैनेजमेंट कराना हो वो भी हो जाएगा। फायरबेस में भी हो सकता है तो फायर स्टोर, बट अगेन वो लिमिटेड है थोड़ा। और अगर तुम्हें प्रॉपर बैकएंड एज अ सर्विस करना है तो एक और हमारे पास चीज़ है, दैट इज ऐप राइट। एक और ऐसा बैकएंड एज अ सर्विस प्रोवाइडर है जो कि प्रॉपर डेटाबेस मैनेज करने में तुम्हें हेल्प करेगा। एक अगर मैंने, हाँ, मेरे पास एक ब्लॉग एप्लीकेशन बना हुआ है, तो मैंने उसका स्कीमा डिज़ाइन किया था, और वो तो मैं दिखा सकता हूँ कि डेटाबेसेस में पहली बात तो ये काफ़ी सारे ऑथराइजेशन प्रोवाइड करता है। तो तुम देखोगे इतने सारे ऑथराइजेशन है, कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो तो अपनी वेबसाइट में लगाने के लिए, लेकिन लॉग इन विद मुझे अमेजोन कराना है, एप्पल कराना है। देन यू हैव डेटाबेसेस में कि ब्लॉग होगा, उसका टाइटल आएगा कंटेंट, यू गेट अ फीचर इमेज, स्टेटस एंड यूज़र आईडी। इसके अंदर इफ़ यू गो टू सेटिंग्स,
तुम्हें सारे ऑपरेशन मिल जाएंगे, तो तुम्हें बेसिक बैकएंड में करने होते हैं, दैट इज क्यूड ऑपरेशन, क्रिएट, डिलीट, अपडेट एंड डिलीट। तो अगर मैं इसमें सोल भी सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे कौन चाहता है कि वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सके, ऑल यूजर्स जो लॉग इन है, एनी ऑल गेस्ट, सिलेक्टेड टीम मेंबर्स ही कर सकें, तो वो सारे ऑपरेशन तुम इसमें आराम से कर सकते हो बिना बैकएंड का सर्वर बनाए या बिना बैकएंड का लोड लिए। तो ऐसी कुछ, और ये भी ऐसे ओपन सोर्स एप्लीकेशन है, तो काफ़ी अच्छा स्केलेबल है इसका भी। इसमें पेड वर्जन्स भी है, अगर इफ़ यू वांट यू कैन एक्सप्लोर इट आउट। अगर ये तो हो गई बैक एंड एज अ सर्विस की बात, बट ऑफकोर्स जब तुम अपना ऐप स्केल करोगे या फिर उसमें तो मल्टीपल कॉम्प्लेक्स क्वेरीज रन करोगे, तो हमें बैक एंड करना ही पड़ेगा। तो लाइक बैक एंड का थोड़ा ओवरव्यू देने के लिए अब कार्तिक है, तो तुम्हें थोड़ा नोट जेएस और ऐप डेवलपमेंट के बारे में बताएगा। सो कार्तिक, थैंक यू। अगर इसमें किसी को डाउट और वैसे भी पूछ सकता है कि फाइव इसमें कैसे होगा, बाकी मैं स्क्रिप्ट शेयर कर दी है यहाँ पे। ओके। Hello, everyone. Myself Karthik, uh, technical co-head at Full Stack. Just a second, मैं screen sharing शुरू करता हूँ. Am I audible right? Okay. So first of all, किसने किसने यहाँ पे Mern Stack या Node.js का नाम सुना है already? They can raise their hands. Okay. So pretty good amount जिन लोगों ने सुना है. I'll be focusing on conceptual side of Node.js and app development यहाँ पे. So what is Node.js? Node.js basically. तो earlier what used to happen, जितनी भी front end technologies थी, उनको रन करने के लिए ब्राउजर को यूज किया जाता था फॉर द सर्वर साइड. लाइक देयर आर टू साइड बेसिकली, एक क्लाइंट साइड होती है एंड एक सर्वर साइड होती है. तो जितने भी सर्वर साइड रिक्वायरमेंट्स थी हमारी, हम ब्राउजर पे रन करते थे before Node.js. Then the creator of Node.js did was, browser में एक V8 engine होता है. He took that and compiled it with C++. So and thus created the Node.js, which अब क्या हुआ कि now you can run both sides, client side and server side, within a language which is JavaScript, of course. And before moving forward, I'll be teaching you how to make a pizza यहाँ पे. क्या ये वर्क नहीं कर रहा है? सो गाइस देखो, पिज्जा बनाने के लिए क्या चाहिए होता है. जस्ट किडिंग. आई विल नॉट बी टीचिंग हाउ टू मेक अ पिज्जा ऑफ कोर्स, बट इमेजिन अ पिज्जा शॉप जहाँ पे देयर इज अ वेटर and he's taking orders. There are multiple customers sitting in the pizza shop, or he takes one order and waits for chef to make that order and then delivers the pizza. Okay, so meanwhile बाकी जितने भी customers हैं वो wait कर रहे हैं बस. तो दिस इज व्हाट यूज्ड टू हैपन. वेटर हमारा ब्राउजर है, वो जो भी हमारा लाइक ऑपरेशन है या रिक्वेस्ट है जो भी है, वो लेता था एंड जस्ट वेट करता था जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए, तब तक बाकी रिक्वेस्ट या ऑपरेशन वेट करते रहते थे. बट व्हाट हैपेंड अब आफ्टर नोड जेएस वाज कि जब वेटर टुक अ ऑर्डर and gave it to chef to make the order and then went on to take other orders. So ये यहाँ पे आके हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि होती है नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस. अब यहाँ पे जितने भी ऑपरेशंस हैं वो ब्लॉक नहीं हो रहे हैं. सो दिस वाज अ वेरी वेरी मेजर चेंज जो नोड जेएस ने किया एंड विच वाज वेरी मच रिक्वायर्ड. तभी लाइक नोड जेएस रिप्लेस what earlier used to be done on browsers. And one very good feature of Node.js is it's asynchronous. Asynchronous means basically it can multitask various operations simultaneously at a single time. तो पहली बात तो वो मल्टीपल ऑपरेशंस एक टाइम पे कर रहा है एंड जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं वो ब्लॉक नहीं हो रहे हैं. सो थाउजेंड्स मिलियंस बिलियंस पे ऑपरेशंस एक सेकंड में हो सकते हैं साइमल्टेनियसली. सो ये बहुत बड़ा चेंज था जो नोड जेएस ने लाया एंड टुक इट्स स्पॉट, टुक इट्स थ्रोन. एडवांटेजेस यही हो गया फर्स्ट, सिंस इतनी रिक्वेस्ट एक टाइम पे वो मैनेज कर सकता है तो स्केलेबल हो गया.
like very scalable हो गया, और super fast of course because of these uh, reasons only. And just a second. हाँ, तो basically Node.js is a runtime environment that allows JavaScript to run on servers. Be- and and then I'll be moving on app development. So app development भी दो तरीके से होते हैं, like they are native apps and cross platform apps. अब जो native apps होते हैं, they are built mainly on Java or Kotlin using. अब इनके साथ issue क्या है कि they first of all take a hell lot of time to code, और उसके अलावा जो लाइक यूजर्स हैं, लाइक आज का क्या है कि जावास्क्रिप्ट इज गेटिंग फेमस मोर लाइक डे बाय डे, बी इट अ स्टैक डेवलपर या कोई भी डेवलपर हो, तो जावास्क्रिप्ट जो है बहुत फेमस हो रही है। तो जो जावा कोटलिन है उसे स्विच करने में लोगों को बहुत दिक्कत होती है कभी कभार, जैसे जिसने लाइक डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट पढ़ी है, कोटलिन नहीं पढ़ी है, कुछ ऐसा सीन है, तो उसके लिए क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्स बिल्ड करना इजी हो जाता है, और दे आर मच लाइक बेटर एज ऑफ नाउ. नेटिव एप्स सूट बेटर बिकॉज दे आर बिल्ट ऑन नेटिव लैंग्वेजेस फॉर द नेटिव इन्वायरमेंट्स. अब क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या हो जाता है, एक ही कोड बेस है और iOS एंड्रॉइड जैसे आपके दो प्लेटफॉर्म हो गए फॉर एग्जांपल, तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे रन हो रहा है. अब उनकी जो तीन मोस्ट फेमस अभी लाइक फ्रेमवर्क्स या लेट्स से जितने भी आपकी लैंग्वेजेस हैं वो ये हैं, रिएक्ट नेटिव, फ्लटर एंड आयोनिक. टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट रिएक्ट नेटिव एंड फ्लटर बिकॉज these are the major like shareholders अभी in the app development scene. So React Native तो like उनके लिए बहुत इजी जिनको React पहले से ही आती है. अगर आपको आई थिंक yesterday शुभ taught what React is. So जिनको भी अभी जो सीखना चाह रहे हैं, like they will be learning in the future, वो बहुत इजी बिल्ड होगा रिएक्ट नेटिव पे करना उन्हें. अब इसमें सबसे जो लाइक मेन इसका एमवीपी है वो है वन कोड बेस्ड टू प्लेटफॉर्म्स. वही अगेन द क्रॉस प्लेटफॉर्म थिंग. इट सेम code can be run on iOS and Android. It's like being bilingual without the effort. और native feels of course ये actually native है नहीं. It uses native components, actual जो native components होते हैं आपके, तो ऐप जो है एग्जैक्टली फील देता है नेटिव की, तो विच इज वेरी गुड. बेसिकली लेस एफर्ट और नेटिव फील यहाँ पे हमें मिल रही है, और ह्यूज इकोसिस्टम हो गया बिकॉज अब दिस वाज मेड बाय फेसबुक इन 2013 आई गेस. सो यहाँ पे क्या हुआ कि अब इसकी कम्युनिटी बहुत बहुत लाइक वास्ट हो गई है. रिएक्ट नेटिव में इफ यू नीड एनी हेल्प, कुछ भी चाहिए आपको, लाइक बेसिक से बेसिक भी कुछ डेवलपमेंट पे जाना है इसमें, तो इजीली मिल जाता है अवेलेबल इन नेट पे. तो ये बहुत बड़ा लाइक इसका आई से प्लस पॉइंट है. एंड देन विल बी मूविंग टू फ्लटर. जस्ट अ सेकंड. ओके. हाँ, सी फ्लटर इज अ डिफरेंट थिंग. अब इट वाज डेवलप्ड बाय काउंटर पार्ट ऑफ फेसबुक विच इज डेफिनेटली गूगल. सो गूगल ने क्या किया, एक लैंग्वेज होती है डार्ट, तो उस पे बिल्ट होता है ये, और फ्लटर इज सॉर्ट ऑफ द इंजन जिस पे वो लैंग्वेज रन होती है. और फ्लटर का इम्पोर्टेंट लाइक जो अभी पॉइंट्स उसे रेस पे आगे ले जा रहे हैं वो ये है कि हाई परफॉर्मेंस. अब फ्लटर कंपाइल्स कर देगा डायरेक्टली नेटिव कोड, लाइक जो भी आपका मिडल मैन आ रहा है उसको स्किप करके तुरंत तुरंत ऐप इंजन पे ही वो हो जाता है. और रिएक्ट नेटिव का क्या है कि वो नेटिव कंपाइलेशन पहले करता है, देन फिर जाके जो कंपोनेंट्स वो कंपाइल हो रहे हैं फिर वो आपको एक्चुअली विजिबल हो रहे हैं प्रोसेसिंग होने के बाद. अब यहाँ पे ये क्विकली हो जा रहा है बिकॉज फ्लटर का खुद का इंजन है उसमें. और द बेस्ट थिंग अबाउट फ्लटर फ्लटर विल बी कि आपको हर पिक्सल का कंट्रोल मिल जाता है इसमें. यहाँ पे डिजाइन हैवी ऐप, जैसे लेट्स से यू आर मेकिंग अ गेमिंग ऐप, या फिर इट कैन बी एनीथिंग, सम फैशन ऐप हो गया जहाँ पे डिजाइन हैवी नीड्स है आपकी, तो इसमें ब्यूटीफुल यूआईस बिल्ड हो जाती हैं, और हर एक विजिट आप अपना पूरा वो बना सकते हो, उसको बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि इसमें विजिट बेस्ड सिस्टम होता है. तो इट्स लाइक वेरी इजी for making designs which didn't existed earlier. If you want to build something new, like you have some let's say um, some like
MVP फॉर योर ऐप जो आपको सेल कर रहा है, बट वो फीचर एग्जिस्ट नहीं करता था। अब इसमें बनाना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। और वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स फ्लटर की जो है, जो फेमस कर रही है उसे, वो हॉट रीलोड है। अब जैसे ही आप कोड करते हैं वो तुरंत रिफ्लेक्ट करता है, तो इंस्टेंट अपडेट्स जाते हैं, डेवलपमेंट जैसे ही डेवलपमेंट हुआ तुरंत अपडेट हो गया ऐप पे। सो हॉट रीलोड एक बहुत ही बड़ा फीचर है जो फ्लटर को आगे ले जा रहा है ऐप डेवलपमेंट की जर्नी पे। हाँ, आई ऑल्सो वांटेड टू टॉक अबाउट ड्रॉबैक्स। अब जो रिएक्ट नेटिव है उसका ड्रॉबैक है कि परफॉर्मेंस इश्यूज कभी कभार आ सकते हैं। जैसे गेम्स या एआर का, एआर बेस्ड ऐप है आपका, तो वहाँ पे कभी कभार परफॉर्मेंस इश्यूज आ सकते हैं। और कॉम्प्लेक्स अगर नेटिव इंटीग्रेशन आप कर रहे हो, तो दिस पॉसिबिलिटी कि आपको बहुत सारी नेटिव कोडिंग स्किल्स पे आना पड़े वापस, विच वाज द कोर रीजन कि हम लोगों ने नेटिव ऐप्स स्किप करके क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप्स पे आए थे। तो अगर आपको उधर ही आना पड़ा है, तो देयर इज लाइक इट मेक्स मोर सेंस टू नॉट चूज रिएक्ट नेटिव। नाउ आई विल बी टेलिंग यू अबाउट ड्रॉबैक्स ऑफ फ्लटर भी, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है। अब फ्लटर का क्या है, बिकॉज इसमें हर यूआई को आप बेसिक से डिजाइन कर रहे हो, हर फीचर को, तो बल्कियर एप्स बनते हैं यहाँ पे। जितने भी एप्स हैं आपके, लाइक दे टेंड टू बी बल्कियर, बट वही है कि इफ इट इज वर्थ इट, इट इज वर्थ इट। और इकोसिस्टम स्मॉलर है फ्लटर का भी, बिकॉज इट्स कंपैरेटिवली अ न्यूअर लाइक ऐप बिल्डिंग सिस्टम। तो अभी इसकी कम्युनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर इन केस आपको लाइक यू फेस सम प्रॉब्लम, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसका सॉल्यूशन नेट पे ना मिले, आपको खुद ढूंढना पड़े। तो ये काफी बड़ा, लाइक यू कैन से इसका ड्रॉबैक होगा। एंड कस्टम डिजाइन एफर्ट इज कैन बी सेड कि ये मतलब ड्रॉबैक है, बट इट कैन बी एडवांटेज ऑल्सो। अब आपको अगर पिक्सल परफेक्ट अप्रोच चाहिए, तो फ्लटर इज द बेस्ट थिंग आउट देयर। बट अब वो पिक्सल परफेक्ट अप्रोच गेन करने के लिए आपको एफर्ट्स भी वैसे ही लगाने पड़ते हैं। सो दैट इज द थिंग, अगर आप कर सकते हो तो दिस इज डेफिनेटली द बेटर चॉइस। हाँ, तो अब अगर साइड ऑन साइड कंपेयर करें, तो लैंग्वेज का तो रिएक्ट नेटिव यूजेस जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के भी जितने हमारे डेव्स हैं उनके लिए डेफिनेटली रिएक्ट नेटिव बेटर। फ्लटर यूजेस डार्ट, तो वो एक स्टीपर लर्निंग कर्व है, वो थोड़ा टाइम लेगा। बट अगर आप इंटायरली न्यू है, आपकी रिक्वायरमेंट्स है यूआई, तो फ्लटर इज डेफिनेटली द बेटर चॉइस फॉर यू। वही अगेन, फ्लटर ड्रॉज एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, एंड लर्निंग कर्व का वही, फ्लटर टेक्स अ बिट लॉन्गर टू मास्टर। परफॉर्मेंस का फ्लटर विंस विद फास्ट रेंडरिंग एंड स्मूथ एनिमेशंस, बिकॉज अगेन फ्लटर पूरा अपना इंजन ही प्रोवाइड करता है। और भाई अगर आपको एनिमेशंस और यूआई बेस्ड रखना है ऐप, लाइक आई हैव बीन रिपीटिंग दिस मेनी टाइम्स, बट तो तब आपका फ्लटर इज द बेस्ट चॉइस। बाकी कम्युनिटी का लाइक वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। हाँ भाई, इट्स लाइक चूजिंग कॉफी और टी। अब कॉफी किसी को सूट कर रही है, टी किसी को सूट कर रही है, वो तो नीड्स और टेस्ट पे डिपेंड करता है। तो जो जिसको सूट करता है उस हिसाब से बेटर हो जाता है। आयोनिक इज ऑल्सो थिंग जो अभी फेमस हो रही है, बट दीज आर द मेजर लाइक इंडस्ट्री लीडर्स अभी। एंड ये बाकी तो हाँ, नोड जेएस के एप्लीकेशंस। अब मर्न स्टैक तो लाइक मोस्ट ऑफ यू हैव ऑलरेडी हर्ड। सो नोड जेएस का क्या है कि विच इज बेसिकली मोंगो एक्सप्रेस नोड एंड देन रिएक्ट। अब रिएक्ट जिसने जिसने सीखी है या सीख रहा है, उसको इवेंचुअली नोड सीखना लाइक विल बी लाइक चेरी ऑन द केक। नोड जब आप सीखोगे तो उसी का एक फ्रेमवर्क होता है एक्सप्रेस। तो और मोंगो इज जस्ट लाइक डेटाबेस वेरिएंट जो my co-head Weber was telling, like Firebase, you can use Firebase or Mongo. तो वो तो लाइक इट्स अ चॉइस, बट Node.js के एप्लीकेशन बहुत बियॉन्ड जाते हैं। अब जब आप एप्स बनाते हो, लाइक आई हैव बीन मेकिंग एप्स सिंस 2 years आई थिंक। तो अब फ्लटर के साथ आप Node.js कंबाइन कर सकते हो अगर आपकी नीड्स वैसी है। और अगेन देन Firebase या Mongo यूज कर सकते हो फॉर डेटाबेस एंड सर्वर साइड। आपका हो गया Node.js। अब रिएक्ट के साथ, रिएक्ट नेटिव या रिएक्ट कुछ भी हुआ, उसके साथ Node.js यूज कर सकते हो। Node.js अगर आपने एक बार सीख लिया, तो लाइक दैट विल बी योर वेरी
very यूजफुल थिंग जो आपकी डेवलपमेंट जर्नी में बहुत काम आएगा आगे। और बाकी तो like I've been telling you, also like this is all for me. For me, आज का we were supposed to talk about conceptual things. If you want to learn more, might be want to learn how to make a pizza, तो उस पे हम बात करते हैं इन फुल स्टैक क्लासेस विच इज इन जनवरी में हमें फुल स्टैक क्लासेस ज्वाइन करिए, वहाँ पे कोडिंग भी होगी, पिज्जा भी होगा, पिज्जा बनाना। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम मी, थैंक यू। Loved it. Finally joining all the classes after a long time, after 1 year. Also, guys, there's a feedback form in the message section. Please do fill it before leaving the meeting. And that's it for today's session about full stack overview. If there are any questions, feel free, Excuse me. please. Excuse me. And do fill the feedback form before leaving. Uh, Hello? Also join the full stack community chat and GDG community chat for Yeah. updates. Shobh, I think Krishna has a question. Yeah, Krishna. Uh, Actually, it's been can final year students also join the club? Uh, we'll refrain from answering that right now. We'll answer that later. If you have any questions related to what today's session was about, please do ask. Actually, I couldn't join. Many sessions I couldn't join. This is my first session. I believe we do have a recording of today's session, right, Shubh? I guess Yeah. So Nishant. we'll promptly see to that. Hmm. Yeah, That's I'll about it. join when I have time. Yep. Badhiya. All right. So that's it for today, and I'm repeating it again to fill the feedback form before leaving. भर दो guys. चलो. Thank you. Welcome. You guys may leave ऑल after राइट, filling the form, guys. ऑल राइट, सी या गाइस। See ya, guys.